how can the so-called retirement benefits or retiral benefits or pension be more than the salary that she drew when she was working in the ICICI? The average annual salary of Miss Madhvi P. Buch when she was employed with ICICI was 1 crore 30 lakh rupees annual salary, average. The average pension or the so-called retirement benefits turn out to be 2 crore 77 lakh per annum. Now how is it even possible? And in case this is retirement or pension, retiral benefits or pension, how come there was a break in 15-16 financial year and it resumes again in 16-17, which coincides with her appointment as whole-time member of SEBI? And if you see that table, therefore I want this table to be seen by you constantly. There is a particular year which says no salary. That ended her relationship with ICICI technically. But again, when she becomes SEBI member, whole-time member, the relationship resumes. She starts getting money again, and big sum. We, in fact, now want to demand that SEBI should come out clean, give a clarification, respond to our charges. TDS amount को taxable income में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का. हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप है. हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की वो अलग है, हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है और यहां भी माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की. बताएं, वी डिमांड टू नो. नहीं तो माधवी जी जवाब दें. हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है. As I said, this is the tip of the iceberg. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.